السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. इस आयत का तर्जुमा है और जो मेरे बंदे La traduction de ce verset est comme suit. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, certainement je suis tout prêt. J'exauce la prière du suppliant quand il m'implore. Ils doivent donc m'écouter et croire en moi, afin qu'ils soient bien guidés. Par la grâce d'Allah, nous sommes en train de traverser par le mois du Ramadan. Il s'agit du mois de l'exaucement des prières. De par sa grâce spéciale, Allah a annoncé qu'il exauce les supplications au cours de ce mois. Il fait couler sa source spéciale au cours de ce mois, car au cours de ce mois, chacune des actions de l'homme est consacrée à la quête du plaisir de Dieu. Il cesse même de manger et de boire pour la cause d'Allah durant une période spécifique. C'est pour cette raison que le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a déclaré: les portes du paradis sont ouvertes au cours de ce mois et les portes de l'enfer sont fermées. Satan est enchaîné au cours de ce mois. Ainsi, nous sommes chanceux qu'Allah nous a offert les moyens pour mériter sa proximité. Nous serons des plus malheureux si nous ne profitons pas de pareilles circonstances.
En ce monde, ceux qui commettent l'adultère, les brigands, les voleurs, les pécheurs, les vicieux, cessent-ils de commettre leurs méfaits au cours du Ramadan? Certainement, ils ne cessent de le faire. Si les satans de tout un chacun étaient enchaînés, eh bien, ils ne commettront pas ces actes sataniques. Il s'agit en fait d'un conseil adressé aux croyants, un conseil qui est adressé à ceux qui souhaitent mériter la proximité de Dieu. Au cours du Ramadan, suite à mes injonctions, vous vous interdisez des actes licites, déclare Allah. C'est pour cette raison que je vous donne la bonne nouvelle que Satan ne jouit pas durant le Ramadan de sa liberté dont il jouit durant les jours ordinaires. Il avait en effet demandé à Dieu l'occasion d'égarer les hommes en les attaquant à droite et à gauche, devant et derrière, et en les incitant à le suivre. Allah déclare, « Aujourd'hui ou durant le Ramadan, j'ai enchaîné Satan pour les jeûneurs. J'ai accordé ma protection entière à ceux qui jeûnent pour moi, pour ceux qui réduisent leur nourriture et qui tentent de progresser dans leur spiritualité. » Le Messie premier l'Islam a déclaré que les véritables jeûneurs diminuent leur aliment physique pour accroître leur aliment spirituel. Ils font des efforts en ce sens. Ceci est l'esprit même du Ramadan et du jeûne. Allah protège pareils gens entièrement de Satan. Allah annonce aussi que sa personne est la récompense de celui qui jeûne. Quelle bonne nouvelle! Nous devons tenter d'en tirer profit et nous devons tenter d'entrer par toutes les portes du ciel qu'Allah nous a ouvertes. Il ne faut pas que nous soyons du nombre de ceux à propos de qui Allah déclare « Je n'ai aucun intérêt à ce que vous ayez faim ou soif ». Si vous avez pris le petit déjeuner le matin et que vous avez rompu votre jeûne le soir, mais que vous n'avez pas accompli ces bonnes œuvres que vous étiez censé accomplir la nuit et pendant la journée, eh bien, votre faim et votre soif de la journée ne vous sera d'aucune utilité. Et Allah n'a d'ailleurs aucun but de vous garder ainsi affamé et assoiffé. Nous avons reçu ce message par l'intermédiaire du saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Nous devons donc comprendre cet esprit et nous devons y conformer notre vie. Ceci est le but du Ramadan. Le verset que j'ai cité se situe entre les versets expliquant l'obligation et les règles du Ramadan, ainsi que l'importance du jeûne du Ramadan. Ce verset évoque la méthode à suivre pour faire exaucer ses prières ou ceux dont les supplications sont acceptées. Ce verset évoque les Ibadur Rahman, ces adorateurs de Dieu ou ceux qui souhaitent en faire partie, ceux qui souhaitent sortir des griffes de Satan et ceux qui veulent voir leurs prières acceptées. Allah déclare au tout début, « Et quand mes serviteurs te demandent, ô messager, où est notre Dieu ?» Il pose cette question comme un amoureux tout anxieux.
हर कोशिश करने का बेचैनी से इजहार करें Ils font tous les तो efforts अल्लाह ताला afin फरमाता है d'atteindre Dieu et expriment उनसे leur कह दो angoisse à cet égard. घबराओ नहीं Allah répond, तुम्हारे करीब ही हूँ dis-leur, n'ayez pas peur, बस पहली je बात suis proche de vous. ये शर्त तो अल्लाह ताला ने अपने पाने Ainsi, la के लिए première अल्लाह ताला का condition pour atteindre Allah बंदा बनने के लिए est le fait de se transformer en serviteur de Dieu. अगर इंसान खुदा ताला का बंदा बनने का हक अदा करने वाला बन जाए Si l'on respecte les exigences dues à un serviteur de Dieu, मैं उसकी eh पुकार bien celui-ci annonce, j'entends son appel उसके शैतान को जकड़ देता हूँ et जब भी j'enchaîne शैतान son हमलावर हो Satan. मैं मदद के लिए आ जाता हूँ Chaque fois que Satan l'attaquera, je me सिर्फ porterai à son साल का एक महीना secours. नहीं जो रमज़ान का महीना है बल्कि Non seulement au cours d'un mois de l'année, celui du Ramadan, हमेशा mais je protégerai pour शैतान की मदद toujours चाहूँगा pareil individu contre les attaques de बशर्ते Satan. कि मेरी बंदगी का Je हक vais le अदा करो protéger des attaques de Satan à condition qu'il respecte मेरे le devoir de हुक्मों mon को culte, à मुस्तकिल condition मानो qu'il obéit à mes commandements en सिर्फ permanence. रमज़ान के महीने में ही देखिए ना बजा लाओ बल्कि हुकूकुल्लाह Il ne doit pas se contenter और हुकूकुल d'accomplir de इबाद bonnes œuvres के हक uniquement अदा करो pendant le Ramadan. कुरान करीम की Il doit तालीम पर अमल करो respecter ses devoirs envers Allah अपने et ईमान envers को पुख्ता autrui. करो अल्लाह Il ताला doit फरमाता suivre है les enseignements du Saint-Coran मेरी et renforcer sa तमाम foi. सिफात पर कामिल यकीन Allah और ईमान déclare, ayez फिर une देखो foi indéfectible et croyez en tous इस mes तरह attributs, et vos कबूलियत दुआ prières गुजारी को seront देखिए exaucées. और अपनी जिंदगियों को इस तरह ढालने वाले ही हकीकी रुश्त और हदायत पाने वाले हैं C'est en menant pareille vie que l'on méritera la véritable खुशकिस्मत हैं direction. हम में से वो जो इस रमज़ान को Chanceux sont ceux des अपनी nôtres qui ont कबूलियत fait de दुआ ce का Ramadan une source de हमेशा जरिया l'exaucement बनाते हैं pérenne de leur prière et qui tentent अल्लाह de ताला के devenir des véritables हकीकी serviteurs अब बनने d'Allah. वाले हों अल्लाह ताला के हुक्मों पर Chanceux sont ceux des अमल nôtres करने qui वाले obéissent au commandement अपने d'Allah ईमान को et qui perfectionnent कामिल leur करने foi. वाले हों हम खुशकिस्मत हैं कि हमें इस ज़माने के इमाम और आ हज़रत Nous सल्लल्लाहु sommes अलैहि वसल्लम के chanceux qu'Allah nous ait permis आशिक d'accepter साथ le Messie premier l'Islam मसीह et माऊद le Mahdi, और महदी l'imam de माऊद l'époque et le को मानने véritable की अल्लाह ताला amoureux du saint तौफीक अता prophète Mohammed paix soit lui. जिन्होंने हमें अल्लाह ताला का कुर्ब पाने के रास्ते C'est lui qui nous a montré दुआ la की voie कबूलियत pour se rapprocher और d'Allah. तरीके दुआ के C'est lui qui nous a montré la रास्ते voie pour favoriser l'acceptation de nos हज़रत मसीह supplications मौद et अलैहिस्सलाम la méthode हिकमत pour से prier. फरमाते हैं अल्लाह जल्ला शानहू ने जो दरवाज़ा Le Messie अपनी premier महबूब की l'Islam भलाई के लिए खोला déclare, है Allah a वो ouvert एक ही une है seule porte pour यानी le bien दुआ de ses créatures. जब कोई Il शख्स s'agit de la porte de la बकाओदारी से supplication. इस दरवाजे में दाखिल होता है Quand, secoué de pleurs et de तो वो lamentations, un मौला suppliant करीम passe par cette porte, उसको पाकीज़गी और eh bien तहारत son की maître चादर पहना देता gracieux है le revêt du manteau de और अपनी pureté अजमत et का de गलबा droiture. उस पर इस कदर कर देता है Et il lui बेजा dévoile कामों tant sa और majesté et sa नाकार हरकतों से grandeur वो et qu'il कोसों fuit loin, très loin भाग même, जाता है des œuvres vaines et futiles. फिर इस बात की वजाहत करते हुए कि कबूलियत दुआ के लिए कैसी हालत पैदा करनी Le होगी Messie premier l'Islam décrit les क्या लवाजमात conditions हैं nécessaires à l'acceptation de la जो कबूलियत prière, दुआ के लिए ज़रूरी les हैं exigences de l'acceptation de la अल्लाह ताला prière का et बनने के les लिए ज़रूरी हैं exigences pour se transformer आप en un फरमाते हैं serviteur d'Allah. कि ये सच्ची बात है कि जो शख्स अमाल से काम नहीं Le लेता Messie premier l'Islam वो दुआ नहीं déclare, करता celui qui n'agit pas बल्कि ne खुदा prie pas, ताला की आजमाइश करता है voire il est en इसलिए train दुआ करने से d'éprouver पहले Dieu. अपनी तमाम ताकतों को खर्च करना ज़रूरी है और D'où यही la मानी इस raison दुआ d'user de toutes ses forces इहदिना avant सिरातल de मुस्तकीम की prier. है Voilà le sens de फरमाया la पहले prière. लाजिम है Ihdina sirat कि al-mustaqim. इंसान अपने एतकाद अमाल में नज़र करे L'homme doit tout d'abord analyser ses अपने croyances et एतकाद ses पे œuvres. अपने अमाल पे नज़र करे L'homme doit d'abord analyser क्योंकि ses खुदा ताला की croyances आदत et है ses œuvres. कि Car इस्लाह selon la pratique divine, इस्लाह la réforme est tributaire de la असबाब के बराए में présence होती des है moyens. वो कोई ना कोई ऐसा सबब पैदा कर देता है
Allah crée des moyens qui sont la cause de la réforme de l'intéressé. Ceux qui affirment que les œuvres sont superflues, étant donné qu'ils ont prié, doivent réfléchir à ce propos. Étant donné qu'ils ont prié, ils pensent que ce n'est pas la peine d'agir, ce n'est pas la peine d'avoir recours aux moyens, ce n'est pas la peine de faire des efforts. Le Messie promet l'Islam déclare « Ils sont des imbéciles. La supplication est en soi un moyen secret qui engendre d'autres moyens. La prière est un moyen secret pour créer d'autres moyens. Ainsi donc, il est nécessaire d'entreprendre des efforts et de demander la grâce d'Allah pour favoriser l'acceptation de ces prières et pour devenir un serviteur d'Allah. Pour mériter ce statut, il faudra se joindre au rang de ses serviteurs en implorant ardemment et en luttant en ce sens. Il faudra lui demander de nous compter parmi ses serviteurs spéciaux en termes de croyance et d'actes. Avant de prier, on doit tenter de conformer ses actions à la volonté de Dieu. Et l'on doit rejoindre ses serviteurs possédant une foi inébranlable. Ces serviteurs qui sont fermes dans leur foi. Ces serviteurs qui sont certains qu'Allah possède le pouvoir de transformer une poignée d'argile en or et que Dieu possède même le pouvoir d'inclure les plus dépravés parmi ses adorateurs et de les guider sur sa voie, tant et si bien qu'ils ne cessent de suivre sa voie. Allah a également mentionné ce sujet dans le Saint-Coran en disant que « Je guide vers ma voie ceux qui s'efforcent de la suivre ». Il affirme à ce propos « وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا » c'est-à-dire nous guidons assurément ceux qui s'efforcent de nous rencontrer. Le mois du Ramadan est très propice à ce djihad. Nous devrions faire de notre mieux durant ces jours et entreprendre un djihad afin que nous puissions rejoindre ces serviteurs de Dieu qui sont ces véritables adorateurs. Nous devons faire ces efforts pour que nous soyons de ceux qui sont proches de lui et que nous soyons de ceux dont Allah exauce les prières. Il nous incombe de rejoindre ceux qui suivent les commandements d'Allah. Nous devons être de ceux qui ont une foi ferme et une certitude parfaite dans tous les attributs de Dieu. Il nous incombe de rejoindre ceux qui suivent la vraie guidance et ceux dont le Satan est enchaîné pour toujours. Mais comme il ressort clairement de la déclaration d'Allah, nous devons au préalable accomplir un djihad. Nous devons ajuster nos conditions à la volonté de Dieu. Le Messie premier l'Islam nous a guidés à différentes occasions à cet égard et il nous a présenté différents angles de ce thème. Il déclare « Celui qui se vautre dans la plus grande indifférence et dans la plus grande paresse
ne profitera pas des faveurs de Dieu, à l'instar de celui qui se voue corps et âme à Dieu, en usant de toutes ses facultés mentales, de toutes ses forces et de toute sa sincérité. Dans un autre verset, Allah indique ceci à ce propos. Il déclare وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. C'est-à-dire, nous dirigerons assurément sur nos voies ceux qui font des efforts pour marcher sur nos voies. Ici, le Messie premier salam a précisé que Dieu ne va pas inclure le négligent et le paresseux parmi ceux qui s'évertuent dans sa voie, ceux qui font tout pour marcher sur la voie de Dieu, ceux qui font de leur mieux pour mériter sa proximité. Il s'agit de ces personnes qui accomplissent un djihad. D'aucuns présentent leurs questions à ce sujet et ils m'écrivent à ce propos. Ils disent que nous avons beaucoup prié, mais nous n'avons pas atteint notre objectif. Ceux qui font pareille déclaration se trompent. Allah n'a jamais tort. Quelqu'un peut croire qu'il est en train de faire de grandes prières, des prières très importantes, quand aux yeux d'Allah, ces prières comportent encore des lacunes, quand cette personne doit encore faire plus d'efforts. Le suppliant doit également examiner la manière dont il prie. Le Messie premier salam déclare qu'Allah guide certainement sur sa voie ceux qui usent de toutes leurs facultés mentales, ceux qui usent de toutes leurs forces et ceux qui sont très sincères dans leur quête de Dieu. Allah déclare que certainement nous guidons pareils gens. Ainsi, nous devons examiner si nous avons suivi les commandements d'Allah au mieux de nos capacités, au mieux de notre intellect, conformément à cette injonction de Dieu qui déclare « Falyastajibu li », c'est-à-dire qu'ils doivent répondre à mon appel en premier. Nous devons nous demander si nous nous évertuons à suivre les commandements d'Allah, si nous tentons de répondre à tout appel de Dieu. Nous devons nous demander si nous tentons de suivre toutes ces injonctions avec sincérité et fidélité. Si cela n'est pas le cas, eh bien, nous ne devons pas nous plaindre. Nous ne devons pas nous plaindre qu'Allah n'a pas exaucé nos prières. Ainsi donc, pour que nos prières soient exaucées, il faudra au préalable changer sa situation, il faudra faire un pas vers Dieu. Un djihad est nécessaire à cet égard. Allah n'attend même pas que son serviteur pousse son djihad à son apogée. Allah est si bienveillant qu'il le récompense en acceptant ses moindres efforts comme un grand djihad. Étant donné que la rahmania de Dieu prévaut sur tout, le djihad du serviteur devient facile. Allah lui facilite la tâche. Et le saint prophète Mohammed lui a déclaré qu'Allah affirme que lorsque le serviteur fait un pas vers moi, eh bien je fais 2 pas vers lui. Je m'avance vers mon serviteur qui marche dans ma direction. Et lorsque mon serviteur marche vers moi, eh bien je cours dans sa direction. Ainsi donc, Dieu est à ce point bienveillant envers nous. Mais la sincérité et la fidélité sont les conditions essentielles. Il ne faut pas être de ceux qui affirment qu'ils accompliront la salat au cours du Ramadan, qu'ils vont suivre les injonctions d'Allah au cours du Ramadan et qu'ils vont respecter leurs devoirs envers Dieu et envers ses créatures au cours du Ramadan. Certes, ils le font au cours du Ramadan, mais après le Ramadan, ils oublient Dieu et ils oublient ses commandements.
Si le matérialisme l'emporte sur nous, nous ne devrions pas plaindre à propos de Dieu en disant que Dieu a promis qu'il va répondre à l'appel de celui qui le supplie et que nous avons beau prier au cours du Ramadan, mais nos supplications n'ont pas été exaucées. Allah connaît tout. Il ne faut jamais l'oublier. Il sait que celui-là a fait des promesses et qu'il a rompu ses promesses. Et à présent, il se concentre sur les bonnes œuvres uniquement au cours du Ramadan. Allah traite pareils gens comme il le souhaite. Mais parfois, il accepte également leurs prières afin qu'ils sachent qu'Allah exauce les suppliques et afin que ces gens se prosternent davantage devant Dieu à tout moment. Ainsi donc, Allah n'opprime pas son serviteur. Allah tente à tout instant de le prendre dans le giron de son amour. Allah est plus heureux du retour de son serviteur et de son obéissance sincère qu'une mère qui retrouve son enfant perdu ou qu'un voyageur qui retrouve son chameau chargé de provisions après l'avoir perdu en plein désert. L'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous a présenté ces exemples pour décrire la joie d'Allah à l'égard de son serviteur qui se tourne vers lui. C'est nous qui négligeons nos devoirs envers Allah. Et nous avons l'audace de nous plaindre qu'Allah n'a pas exaucé nos prières. Ainsi donc, il faudra accomplir son introspection à cet égard. Nous devons promettre de faire de ce Ramadan un moyen pour atteindre Dieu. Et nous devons promettre que nous allons faire de notre mieux pour suivre ses ordres. Peu importe notre situation, peu importe combien de temps nous devons mener ce djihad, nous ne cesserons de mener ce djihad pour gagner l'amour et la proximité de Dieu. Et nous tenterons de renforcer davantage notre foi. Si telle est notre condition, nous verrons certainement les miracles de l'exaucement de nos prières. Il ne s'agit pas là de simples paroles. D'aucuns ont atteint ce stade et l'atteignent jusqu'à présent. Le Messie premier l'Islam déclare à ce propos: 1300 ans se sont écoulés depuis la révélation de ce verset. Et sans nul doute, ceux qui, conformément à sa déclaration, se sont évertués au cours de cette période ont profité de la promesse divine évoquée par Dieu, notamment qu'ils seront guidés vers la voie de Dieu. Et jusqu'à présent, des gens en profitent et ils en profiteront à l'avenir. Ainsi, c'est à nous de faire des efforts pour profiter de cette grâce divine. Nous ne devons jamais atténuer notre djihad. Ce djihad pour gagner le plaisir d'Allah, ce djihad pour suivre les commandements d'Allah, ce djihad pour suivre les 700 commandements du Saint-Coran, ce djihad pour perfectionner notre foi, ce djihad pour acquérir les attributs d'Allah. Nous ne devons jamais atténuer ce djihad. Chacun de nos pas doit être vers le progrès. Et ce Ramadan doit être le jalon de notre djihad. Je présente ici d'autres dires du Messie premier l'Islam sur ce sujet.
ये ऐसा मज़मून है कि जिसको बार-बार सुनकर समझने की ज़रूरत है। और C'est अगर un ये हमारी thème qui ज़िंदगियों की mérite d'être हकीकत में répété et compris par nous. ज़िंदगियों का हकीकत में हिस्सा बन जाए Si ce thème fait partie तो एक intégrante de nos इनकलाब vies, nous pourrons दुनिया में créer पैदा une कर सकते révolution dans le monde. हैं। आप फरमाते हैं कि जिस तरह हमारी दुनियावी ज़िंदगी में सरी नज़र आता है Le कि Messie हमारे premier हर salam फ़ेल déclare: Les हर एक expériences de फ़ेल la के vie लिए nous एक ज़रूरी enseignent que नतीजा है chaque action और génère वो une नतीजा खुदा réaction de ताला la का part फ़ेल de है। Dieu. ऐसा ही दीन के मुतालिक भी यही कानून है Cette loi, qui जैसा कि s'applique खुदा ताला aussi dans le इन cadre दोनों spirituel, मिसालों में est साफ énoncée फरमाता dans है les deux versets अल्लज़ीना suivants du जाहदू फीना Saint-Coran. लनहदियन्नहुम सुबुलना وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ फलम्मा ज़ागू سُبُلَنَا अज़ाग़ल्लाहु क़ुलूबहुम فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ. यानी जो लोग इस फ़ेल को बजा लाए कि उन्होंने खुदा ताला की जुस्तजू में C'est-à-dire en पूरी पूरी réaction à कोशिश की l'effort इस entrepris फ़ेल के par लिए ceux लाज़मी qui तौर se पर sont évertués corps हमारा et ये âme फ़ेल pour nous होगा कि atteindre, हम उनको अपनी राह eh दिखा bien, देंगे nous les guiderons sur notre और voie. जिन लोगों ने कजी इख्तियार की और सीधी राह Quant पर à चलना ceux ना qui ont चाहा emprunté la voie तो borgne हमारा फ़ेल et इसकी qui ne निस्बत souhaitent ये pas होगा marcher sur la bonne कि हम voie, उनके दिलों को nous कज कर देंगे। pervertirons leur cœur en conséquence. इसको एक और जाविया से आपने पेश फरमा दिया Le Messie premier खुदा ताला l'Islam a फरमाता है présenté ce sujet कि sous un अगर autre हमारे angle, notamment राह को qu'Allah हासिल करने के déclare लिए que तुम जिहाद si vous करके vous हमारा फैज़ efforcez de पाते हो suivre notre chemin, तो eh याद bien, रखो vous allez mériter notre grâce. इस बात को भी याद रखो कि Mais इसकी vous devez मंफी aussi पहलू भी connaître l'envers de la médaille, कि मेरी राह पर नहीं चलोगे notamment que si तो vous ne तुम्हारे suivez दिल pas le chemin टेढ़े हो जाएंगे d'Allah, eh bien, vos cœurs vont se pervertir. दुआओं का कबूल होना तो एक तरफ रहा Loin de faire exaucer vos इसके नतीजे prières, में vous allez tomber dans le giron अल्लाह de के रास्ते पर ना Satan en चलने के नतीजे में évitant de marcher तुम sur la शैतान की voie गोद de में गिर Dieu. जाओगे और शैतान की गोद में गिरा हुआ इंसान फिर अपनी Et दुनिया और celui qui est आखिरत tombé dans le दोनों giron खराब de करने वाला बन Satan जाता है détruit à la fois sa vie बस इस d'ici-bas इरशाद et में sa जहाँ vie de l'au-delà. खुशखबरी है वहाँ अल्लाह ताला ने दूसरी जगह Cet énoncé de Dieu मज़ाक भी comprend पेश की d'une part une bonne nouvelle, mais Allah फिर a également émis un avertissement एक ici. और जगह वजाहत फरमाते हुए फरमाते हैं कि इंसान के दिल पर कई किस्म की हालतें वारद होती Le हैं Messie premier salam explique: आखिर Le खुदा cœur ताला de सही l'homme लोगों est की sujet à कमज़ोरी को दूर plusieurs करता है états. Mais और finalement, Dieu पाकीज़गी और dissipe les नेकी को faiblesses बतौर des âmes मोहब्बत vertueuses अता फरमाता है et il les purifie et il leur फिर confère la force उसकी नज़र nécessaire में वो pour सब बातें accomplir le मकरूह हो bien. जाती हैं जो खुदा ताला की Par la नज़र में suite, मकरूह la होती हैं personne concernée और वो considère सब comme राहें प्यारी हो détestable toute जाती हैं chose que Dieu जो déteste खुदा ताला को प्यारी et elle होती हैं considère comme plaisante toute तब chose qui उसको plaît à Dieu. एक ऐसी ताकत मिलती है Cette जिसके personne बाद reçoit par la जोश suite नहीं une आता force après और laquelle एक elle ऐसा ne जोश अता faiblit होता point. है Elle est जिसके बाद récipiendaire d'une कसर नहीं ardeur खाती qui n'est point और ऐसी ternie par तकवा la दी जाती paresse. है कि जिसके बाद Et Dieu lui मासियत नहीं confère la होती taqwa, और रब après करीम laquelle il n'y a ऐसा pas राजी la हो जाता moindre है trace de जिसके बाद péché. खता नहीं Et Dieu le मगर ये gracieux नेमत est देर के si बाद अता content de होती cette है personne qu'elle अव्वल ne अव्वल commet plus de इंसान अपनी transgression. कमज़ोरियों Mais से cette grâce n'est बहुत accordée सी qu'après une longue ठोकरें खाता है période. Étant और faible, असफल की तरफ l'homme गिर जाता है trébuche et tombe फिर au plus आखिर bas des bas उसको lors de सादिक ses पाकर premiers pas. ताकत बाला खींच Mais लेती en है fin de compte, यानी ayant अल्लाह ताला की trouvé le तरफ उसकी दिल véridique, खींचती है une force इसी supérieure की तरफ l'attire, इशारा है जो अल्लाह जल्ल c'est-à-dire Dieu शान l'attire फरमाता vers है lui. Ceci est indiqué dans वल्लज़ीना le verset जाहदू फीना suivant, लनहदियन्नहुम verset dans lequel Allah सुबुलना déclare وَالَّذِينَ यानी جَاهَدُوا فِينَا यानी لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. अरबी में आप फरमाते हैं कि नुसब्बितुहुम अला तक़वा En वल langue ईमान arabe, le Messie premier वनहदियन्नहुम l'Islam सुबुलल explique que ce verset महब्बति signifie: वल इरफान Nous affermissons leurs pas वसनुयस्सिरुहुम sur les voies de la लिलखैरात taqwa et de la वतरकिल foi, इस्यान et nous les guidons यानी हम vers उनको les voies तकवा de ईमान पर l'amour et साबित de la कर देंगे gnose, और et ज़रूर nous उन्हें मोहब्बत facilitons और pour eux मार्फत के रास्तों की l'accomplissement हिदायत des देंगे bonnes œuvres, और उन्हें et नेक nous अमाल पर facilitons जाने pour eux और मासियत को l'abandon तर्क des करने की péchés. तौफीक देते रहेंगे जैसा कि मैंने कहा था Comme je l'ai dit, हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने le Messie premier l'Islam nous a वल्लज़ीना जाहदू prodigué des फीना conseils के sous हवाले से différents angles, en se मुख्तलिफ basant बयान sur le verset जाहिर फरमाए وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا. और इल्म इरफान के दरवाजे खोलने इस हवाले से Il nous a उसने ouvert les portes du savoir et de la बेहद gnose. इंसानी फितरत का नक्शा खींचकर En décrivant la nature humaine, il कि explique इंसान que l'on ne peut एक हालत में demeurer दूसरी dans के le लिए même कायम état. नहीं रह सकता उतार चढ़ाव इंसान की तबीयत में आता रहता है
Il y a des hauts et des bas dans लेकिन la जो सही nature फितरत है humaine. वो अपनी कमजोरी की हालत से भी सबक हासिल करता है. Mais le bienheureux, quant à eux, tire des तौबा leçons de ses इस्तिगफार करता है. faiblesses. Il अल्लाह se ताला के आगे repent, झुकता है il demande pardon à Dieu, और अपनी il कमजोरी पर s'incline शर्मिंदा devant होकर Allah फिर अल्लाह et ताला की il तलाश में ressent जिहाद des के लिए निकल remords en जाता है. raison de ses faiblesses et फिर il अल्लाह se ताला की redresse मोहब्बत pour se mettre en quête de la बख्श पाता personne de Dieu. है, उसकी बख्शिश के Ceci जोश में attise आता है l'amour et la clémence de Dieu. और वो अपने बंदे की तरफ दौड़ कर आता है Dieu court vers son और उसे पाकीज़गी serviteur और नेकी की कुव्वत et अता Dieu फरमाता lui octroie le pouvoir de se है. और purifier जब इंसान et Dieu में lui accorde la अल्लाह ताला possibilité के फजल से d'accomplir le bien. पाकीज़गी और नेकी की कुव्वत पैदा हो जाती है Et quand, de par la grâce divine, तो फिर l'on उसका हर détient la फेल force de se purifier et खुदा ताला d'accomplir की des रज़ा को œuvres हासिल करने pieuses, वाला बन जाता है. chacune de ces actions हर vise किस्म की le कमजोरी plaisir और de सुस्ती से Dieu. वो पाक हो जाता Et है. l'on se débarrasse de toute faiblesse et l'on se वो débarrasse de तकवा toute पर चलने paresse. वाला बन जाता है और गुनाहों से L'on बचाया marche जाता है. sur la voie de la taqwa अल्लाह et l'on ताला est protégé des péchés. की ऐसी रज़ा हासिल करने वाला ऐसा इंसान बन जाता है फिर उससे ऐसी गलतियां Celui qui obtient tel plaisir जल्दी नहीं d'Allah होती ne commet plus des erreurs जो खुदा ताला को susceptibles नाराज d'attirer करने वाली. la colère d'Allah. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया लेकिन याद रखो Le Messie premier l'Islam a इस हालत को déclaré हासिल qu'il faut करने के लिए travailler avec persévérance मुस्तकिल pour atteindre मजाजी cet état. से Il faudra faire preuve de मेहनत करनी चाहिए. constance dans cette voie. आर्जी मेहनत नहीं मुस्तकिल मेहनत की जरूरत है. Ces efforts ne peuvent pas être ये temporaires, il नेकियां और faudra दुआओं की कबूलियत की accomplir जारी un रहने travail जिंदगी का permanent. हिस्सा बन जाते हैं. फिर एक जगह C'est फरमाते हैं ensuite que la vertu et जो l'exaucement हमारी des राह में prières par Dieu मुजाहिदा feront करेगा partie intégrante de हम notre उसको अपनी vie. राहें Le दिखला Messie देंगे. premier l'Islam ये तो explique वादा है qu'Allah फरमाया ये déclare: तो Nous वादा है montrerons और nos फिर voies ये दुआ भी à उसने quiconque सिखा दी है. œuvre sur notre chemin. इहदिना सिरातल D'une मुस्तकीम. part, il y a cette और promesse इंसान et को d'autre चाहिए part, Allah nous enseigne इसको मद्देनजर la रखते prière हुए Ihdina Surat नमाज al-Mustaqim. में En ayant cette एक prière en दुआ tête, l'homme doit implorer Dieu दुआ la करे douleur au cœur tout en souhaitant तमन्ना être de रखे ceux qui ont कि progressé वो भी उन लोगों में et से हो tout en जावे souhaitant être de ceux qui जो détiennent तरक्की la और बसीरत हासिल कर perspicacité. चुके हैं. Il doit faire ऐसा ses ना हो efforts de peur de quitter ce कि इसके monde आम en से étant बेबसी का aveugle. पर्दा उठाया जाए. बस इस मुकाम को हासिल करने के लिए Ainsi donc, जहाँ अल्लाह Allah ताला guide son serviteur vers son अपने बंदे को chemin अपने रास्ते की afin तरफ qu'il हिदायत atteigne करता है. cette position. De ये même, दुआ भी cette जरूरी है prière est importante और सूरह et फातिहा on पढ़ते doit la वक्त répéter बार बार en पढ़नी चाहिए. récitant la sourate al-Fatiha. इहदिना सिरातल मुस्तकीम. C'est une prière que l'on doit répéter कादियान maintes et के maintes fois. Ihdina Sirat किसी ने एक al-Mustaqim. वाक़या बयान किया हुआ है कि किसी बुजुर्ग की कैसी हालत होती थी नमाज पढ़ते Une हुए. personne a बयान करने relaté वाले un कहते हैं récit de Qadian हज़रत décrivant मसीह l'état de la अलैहिस्सलाम के salat साथी d'un compagnon du Messie premier l'Islam. मस्जिद मुबारक के कोने में खड़े थे Le नमाज पढ़ narrateur रहे थे. déclare बड़ी qu'un खुशियत compagnon du जारी Messie थी premier l'Islam se tenait dans un बड़ी coin de la जारी थी mosquée Mubarak et वो il बड़ी देर तक accomplissait खड़े sa हैं salat avec une grande humilité, avec une grande फिर मुझे dévotion. तजस्सुस पैदा हुआ Il est resté ताकि longtemps देखूं les mains मुझे liées. हल्की हल्की आवाज़ भी आ Le रही थी rapporteur déclare que क्या sa पढ़ रहे हैं. curiosité a été attisée तो par बार ce qu'il बार récitait à voix इहदिना basse. सिरातल मुस्तकीम और इहदिना सिरातल मुस्तकीम को Ce दोहराते चले compagnon जाते ne cessait de और दिक्कत आ répéter रही tout थी. ému Ihdina Surat al-Mustaqim, तो ये Ihdina वो Surat दुआ है al-Mustaqim. जो इंसान को Ainsi donc, अपनी हिदायत की l'on doit réciter cette prière à foison pour que l'on puisse profiter de la direction de Dieu. और पढ़नी चाहिए. फिर हज़रत अक़दस मसीह मौला इस्लाम फरमाते हैं खुदा ताला का ये सच्चा वादा है कि जो शख्स Le सिद्दीक़ Messie दिल premier l'Islam déclare: और नेक नियति Dieu के साथ promet d'ouvrir les उसकी राह voies की de la तलाश करते हैं direction et du savoir à उनको celui हिदायत qui, और en toute मार्फत की राहें खोलता है. sincérité et avec de bonnes intentions, जैसा cherche कि la उसने खुद voie qui फरमाया mène à lui. वल्लज़ीना जाहदू फीना Allah lui-même annonce लनहदियन्नहुम dans le verset सुबुलना. suivant: وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا जो लोग हम لَنَهْدِيَنَّهُم में से होकर سُبُلَنَا. मुजाहिदा करते हैं हम उन पर अपनी राहें खोल देते हैं. हम में से Quant à ऊपर ceux से qui ये font des मुराद है efforts en nous, कि nous les महज dirigerons इखलास और नेक assurément नियति की sur nos बिना voies. पर खुदा Faire की des इतना efforts मकसद en रखकर nous signifie que l'objectif de लेकिन ces personnes ये est मुजाहिदा d'atteindre करते हैं Dieu, सिर्फ खुदा को ही हमने पाना है. et ces और खास personnes मकसद sont sincères दुनियादारी का dans leur मकसद नहीं होता. intention. असल Elles चीज़ souhaitent खुदा का uniquement मकसद है atteindre इखलास के Dieu. साथ. Ils n'ont pas des खुदा को objectifs पाना mondains. मकसद है. Leur but, यानी c'est फरमाया d'atteindre कि Dieu लेकिन en अगर toute कोई इस्तिज़ा sincérité. और ठट्ठे के तरीक़ पर आज़माइश Le करता Messie है premier l'Islam ajoute: Mais en sera तो वो privé नसीब और celui qui महरूम prend la नहीं होगा. voie de la dérision et du ridicule. बस
फरमाया बस इसी पाक असूल की बिना पर अगर तुम सच्चे दिल से En suivant ce principe, si l'on est sincère dans ses efforts वो गफूर et que रहीम l'on ne है cesse लेकिन d'implorer अगर कोई Dieu, अल्लाह ताला की परवाह Dieu नहीं sera करता pardonnant तो et बेनाम है miséricordieux. तो Mais अल्लाह si ताला l'on की ne कोई se परवाह soucie नहीं pas करता de sa personne, eh bien que l'on sache que फिर Dieu आप est फरमाते हैं indépendant. जिस कदर C'est-à-dire qu'Allah ne se souciera pas de votre कारोबार दुनिया के personne. हैं Le Messie promet l'Islam déclare: सबसे अव्वल l'homme doit सब में d'abord अव्वल se इंसान को démener खुश करना avant de पड़ता है pouvoir entamer quelque entreprise en जो भी ce दुनिया bas का monde. कारोबार है पहले इंसान को Si कोशिश l'on करनी souhaite पड़ती है entreprendre quelque दुनिया के chose कामों ici-bas में en भी ce देख लो monde, il faudra faire des 3 साल है efforts. दुनिया में जब वो C'est ce हाथ पाँव principe que हिलाता l'on है voit ici-bas en ce monde. फिर अल्लाह ताला भी बरकत Allah डालता bénit है les efforts de celui qui इसी तरह bouge पर ses खुदा mains ताला et की ses राह में pieds. भी वही लोग De même, कमाल हासिल seuls ceux करते qui हैं s'efforcent जो dans la मुजाहिदा voie de करते Dieu हैं atteignent la perfection. इसलिए फरमाया है वल्लज़ीना जाहदू फीना C'est pour लनहदियन्नहुम cette raison que le सुबुलना Saint-Coran annonce وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا बस कोशिश करनी لَنَهْدِيَنَّهُمْ चाहिए سُبُلَنَا. क्योंकि मुजाहिदा ही कामयाबियों की राह है Il faut donc s'évertuer और car फिर la हम lutte दुनियावी est la चीज़ों के voie हसूल du के लिए succès. अपनी कोशिशों की इंतहा Étant तक donné que nous पहुंचाने poussons à पहुंचाते l'extrême पहुंचने nos की कोशिश efforts pour करते हैं atteindre des objectifs और खुदा mondains, ताला को पाने के pourquoi लिए ne pas en faire de même pour पाने के atteindre रास्तों के Dieu? लिए इंतहाई कोशिश Pourquoi करनी ne है pas pousser à l'extrême nos लोग efforts ये pour समझ लें atteindre कि la हम personne de Dieu? ज़रा सा हमने मुंह Pourquoi से pense-t-on qu'il suffit कहा de और अल्लाह ताला ने prononcer quelques हमारी prières du bout हमें des मंजूर lèvres या et हमारी दुआएं que कबूल nous कर allons ली atteindre Dieu ou que Dieu va बस exaucer nos prières? यहाँ फिर वही बात आ गई कि जो लोग कहते हैं कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती वो Ceux पहले qui अपने disent जायज़ que leurs करें prières n'ont pas été exaucées doivent ये नहीं हो d'abord सकता कि faire अल्लाह leur ताला को introspection. पाने के लिए Il ताला est तकबीर हो impossible qu'il soit और aisé दुनियावी d'atteindre चीज़ों को Allah हासिल et करने qu'on के doit लिए accomplir un मेहनत travail के असूल सामने acharné रखा pour जाए des affaires matérielles. ये असूल फिर हर जगह चलेगा Le même हज़रत principe मसीह मौद s'applique एक partout. जगह इस बात को बयान करते हुए कि Le अल्लाह Messie ताला को premier पाने के लिए l'Islam मेहनत की explique ज़रूरत que है les efforts sont फरमाते हैं nécessaires pour atteindre Dieu. कि जो लोग कोशिश करते हैं हमारी राह में अंजाम कर Il रहनुमाई को déclare: पहुंच ceux qui s'évertuent dans notre जिस voie तरह sont वो guidés en दाना fin de compte. तुखमरेजी का बदूं Sans soin et कोशिश sans और कष्ट में arrosage, la semence बेबरकत रहता demeure है sans रहता bénédiction, बल्कि खुद भी फना हो voire cette जाता है semence va इसी तरह périr. तुम भी इस इकरार को De हर même, रोज sans याद न cette करोगे supplique et और sans दुआएं न cette मांगोगे prière quotidienne कि quémandant खुदाया l'aide de हमारी Dieu, मदद कर l'on ne va pas तो फजल mériter इलाही la वाजिब grâce नहीं de होगा Dieu. और बगैर इमदाद इलाही की तब्दीली नामुमकिन है Et sans aide divine, बस le खुदा मुमकिन changement est रखता है impossible. Telle est la loi de la अल्लाह ताला को nature. पाने के लिए भी ये ज़रूरी है जिस तरह दाना Ceci est डालकर également जमींदार nécessaire बैठा नहीं afin रहता d'atteindre Allah. उसी तरह Un planteur ne croise pas les bras après यहाँ avoir भी ensemencé इंसान sa को terre. सिर्फ ये ले कि मैं ईमान ले De आया même, मैंने il मान ne लिया suffit pas de मेरे dire जाने से qu'on a कुछ नहीं cru, होगा qu'on possède la foi pour ne rien entreprendre बल्कि par la कोशिश करनी suite. होगी लेकिन Nous दाश्त devons भी faire ज़रूरी des है efforts अपने ईमान et को nous devons बढ़ाने prendre soin des plantes de फिर notre आप foi. फरमाते हैं कि जो शख्स खुदा ताला की तरफ Le रुजू Messie करेगा premier l'Islam तो déclare: अल्लाह Dieu ताला se भी उसकी tournera मदद vers करेगा celui qui se tournera हाँ vers lui. ये ज़रूरी है L'homme, कि quant जहाँ à तक बस lui, ne चले doit point वो être अपनी तरफ से négligent. कोताही ना करे फिर जब उसकी Il कोशिश verra la उसके lumière de अपने Dieu इंतहाई lorsque नुक्ता ses पर efforts पहुंचेगी atteindront leur point तो वो खुदा culminant. ताला के नूर को देख लेगा Ceci वल्लज़ीना a été जाहदू फीना indiqué dans le verset लनहदियन्नहुम suivant: وَالَّذِينَ सुबुलना جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُم سُبُلَنَا. में फरमाया कि इसमें इसकी तरफ इशारा है कि जो हक कोशिश का उसके Ceci ज़िम्मा a है été उसे बचा indiqué लाए dans ce verset donc, ये ना करे ce qui कि अगर implique que पानी ces efforts doivent 20 être à la हाथ नीचे hauteur de खोदने ses से निकलता है responsabilités. तो वो À सिर्फ 2 titre हाथ d'exemple, खोदकर on ne doit pas उठा के s'arrêter à 2 mètres 20 quand फीट on का doit खोद creuser 20 30 mètres फीट pour atteindre de खोदने से l'eau. पानी निकलता है Si l'on doit 2 creuser 20 4 फीट mètres खोद pour के atteindre बैठ de जाए l'eau, on ne doit pas तो पानी s'arrêter नहीं à 2 निकलता mètres फरमाया कि pour हर ensuite एक dire काम qu'on n'a में pas reçu d'eau. कामयाबी की यही जड़ है कि हिम्मत ना हारे Le Messie premier l'Islam déclare: la clé du फिर इस succès उम्मत est के la लिए तो अल्लाह ताला का persévérance. वादा है कि अगर कोई पूरे तौर से Dieu a promis दुआ d'accomplir toutes और les तज़किया promesses नफ्स du से काम Coran en लेगा faveur de celui qui, appartenant à cette umma, सब वादे कुरान priera शरीफ de के toute उसके sa साथ पूरे personne होते रहेंगे et qui s'efforcera de se purifier l'âme. जो हिम्मत के साथ जो पूरे तौर पर
दुआ और तज़किया नफ्स से काम लेगा Celui qui va prier कुरान de toute शरीफ sa के सब personne et वादे celui qui va पूरे होकर रहेंगे उसके s'efforcer साथ de se purifier l'âme, हाँ eh bien, इखलाफ Dieu करेगा promet qu'il वो va महरूम रहेगा accomplir toutes les promesses du Coran en sa क्योंकि उसकी faveur. ज़ात को यूर है Mais celui qui उसने अपनी agira तरफ आने की autrement राह en जरूर sera देखी है privé, car Dieu est लेकिन jaloux. उसके दरवाजे तंग Il a बनाए हैं certainement tracé une voie qui conduit à पहुंचता lui, mais वही la है porte qui y mène जो est très तलखियों का étroite. शरबत पी लेवे L'atteindra मेहनत celui qui करनी पड़ती acceptera de boire la coupe amère, लोग दुनिया की फिक्र में c'est-à-dire qu'il दर्द faut बर्दाश्त faire des करते हैं efforts pour cette फरमाया cause. कि लोग Les gens sont prêts à subir toutes दुनिया की sortes de फिक्र में दर्द souffrances, बर्दाश्त करते voire हैं même la mort pour ce bas हत्ता के monde. बाद इसी में हलाक हो जाते हैं Mais लेकिन ils अल्लाह se ताला के refusent लिए l'égratignure d'une एक épine कांटे pour की la भी दर्द cause de बर्दाश्त करना Dieu. पसंद नहीं करते जब तक उसकी तरफ से सिद्क और सब्र Si और la वफादारी के आसार sincérité, जाहिर la ना हो patience et la fidélité जब ne se बंदे की तरफ से manifestent point en l'homme, सिद्क Dieu और सब्र éprouvera-t-il de la और miséricorde en sa वफादारी faveur? के आसार जाहिर ना हो Si l'homme ne fait pas उधर से अल्लाह preuve ताला de की तरफ से sincérité, de रहमत patience के et de आसार fidélité, est-ce que नहीं Dieu जाहिर होते va-t-il भाई को उधर से éprouver रहमत de के la आसार कैसे miséricorde जाहिर à होंगे son égard? बस ये उन लोगों के सवाल का Ainsi, जवाब है ceci est la réponse जो à कहते ceux हैं qui सिर्फ वही affirment बात qu'ils कि ont हमने beau बहुत दुआ prier, की mais que leurs कबूल नहीं की prières n'ont pas été गोया वो खुदा exaucées. ताला को पाबंद कर रहे हैं कि हम C'est comme s'ils affirmaient qu'ils partiront vers Dieu à leur guise. Ils se tourneront vers Dieu quand ils आएंगे auront फिर खुदा besoin ताला de के पास lui, अपनी मर्जी से mais que Dieu, quant à और जब lui, जरूरत doit होगी जरूर आएंगे exaucer leur moindre supplique और खुदा ताला inconditionnellement. नाउजुबिल्लाह हमारा पाबंद है Qu'Allah nous en préserve. कि हम जो कहें और जैसा चाहें वो हमारी दुआ कबूल भी कर ले Or, il n'en est pas ainsi dans les लेकिन lois ये et बात dans les relations de ce monde, तो वो दुनिया के comme l'a कानून expliqué le Messie premier और salam. ताल्लुकात में भी देखते हैं Étant donné कि qu'il जब n'en उन्होंने est pas फरमाया ainsi dans les lois et dans les ऐसा नहीं relations होता de ce monde, eh bien, फिर खुदा comment ताला के peut-on मामले में s'attendre que tous nos vœux इस दुआ को présentés à Dieu seront exaucés क्यों है tels quels et sans aucun कि effort बहुत de जिस notre तरह हम चाहें part? वो हो जाए और बगैर मेहनत के हो जाए बस यहाँ यही फरमाया कि खालिस होकर Ainsi खुदा ताला donc, की le तरफ Messie से आओ premier salam nous फिर demande देखो de उसकी nous प्यार tourner का vers Dieu en toute sincérité et nous फिर आप serons फरमाते हैं témoins de याद son रखना चाहिए amour à notre égard. कि ईमान बगैर Ensuite, अमाल le के Messie ऐसा है premier salam déclare: जैसे कोई बाग बगैर Sachez que अनहार la के foi sans acte est comme un jardin नहरों sans के बगैर canaux pour l'irriguer. पानी के बगैर La बाग foi है sans action जो दरख्त ressemble लगाया à ce जाता है jardin qui est अगर sans मालिक उसकी canaux pour आपाशी की l'irriguer. तवज्जो न करे L'arbre qui est तो एक दिन planté खुश्क se हो जाएगा desséchera un jour si le इसी planteur तरह ne se ईमान का soucie हाल pas है de son irrigation. वल्लदीना Il जहादू en est de फीना même de la यानी तुम foi. हल्के हल्के काम पर न रहो وَالَّذِينَ बल्कि جَاهَدُوا इस राह में فِينَا. बड़े बड़े मुजाहिदात की ज़रूरत है C'est-à-dire, vous ne devez pas vous नफ्स contenter को d'un travail léger, mais de grandes luttes sont बैल से nécessaires. मुशाबियत दी गई है Ici, le Messie बस premier अल्लाह ताला salam जो a फरमाता comparé है le nafs à un taureau. वलयुमिनु बी Allah déclare وَلْيُؤْمِنُوا بِي, कि मुझे c'est-à-dire que पुकारने ceux वाले qui मुझ पर ईमान m'invoquent लाएं doivent croire en moi. तो ईमान ये है Ainsi donc, la कि foi हुकूकुल्लाह और consiste हुकूकुल à इबाद की अदायगी से respecter nos devoirs envers Allah et अल्लाह nos ताला devoirs को envers autrui. ईमान का हक अदा करें अल्लाह ताला ईमान के बाग की परवरिश Allah demande à ses निगहदाश्त करने का अपने बंदों serviteurs को हुक्म d'irriguer leur jardin de la foi हम et d'en देखते हैं prendre अपने soin. घरों में भी पौधों को भी हम Si अगर nous ne बाकायदगी से prenons ना pas देखें soin régulièrement de nos उनका plantes à ख्याल la न रखें maison, elles vont commencer à तो se सूखने लग dessécher. जाते हैं फिर ईमान के बाग को किस तरह हम बगैर निगहदाश्त के Ainsi छोड़ donc, सकते हैं comment pouvons-nous quitter le jardin de la फिर एक foi और sans जाविये en से prendre soin? हज़रत मसीह मौऊद इस्लाम इस बात को Le बयान Messie फरमा रहे premier हैं salam explique ce sujet कि sous un autre हमारे angle. राह के मुजाहिद पावेंगे अल्लाह ताला फरमाता है कि हमारे राह के Allah मुजाहिद déclare: Nous guiderons रास्ता vers पावेंगे nous ceux qui s'évertuent इसके sur notre मानी ये voie. है कि इस राह में Cela signifie पैगंबर qu'il के faut साथ मिलकर lutter जद्दोजहद dans करना cette होगा voie avec le prophète. 1-2 घंटे के बाद भाग जाना मुजाहिद का Le काम नहीं Moudjahid ne s'enfuit pas après 1 ou 2 heures de बल्कि travail. जान देने के लिए तैयार रहना उसका काम है Il doit être 2 prêt à मंजिलों की offrir निशानी sa vie. इस्तिकामत है La persévérance est बस donc le signe du हमने जब अपने अहद Muttaqi. बैत में ये अहद किया है कि हम दीन को दुनिया पर Dans notre serment कदम d'allégeance, रखेंगे nous promettons de préférer la तो foi à फिर ce monde. इस अहद पर कायम रहने के लिए इस बात की ज़रूरत है कि हम ये Pour देखें कि respecter दीन cette हमसे promesse et cet क्या चाहता engagement, है nous devons voir ce इसको हम que la religion कदम रखें exige de notre part.
et ce à quoi nous devons accorder priorité. Et ensuite, nous devons suivre cette voie avec constance. Allah Ta'ala se dar kar uski raah mein talash ko raah jo shakhs mahz Allah Ta'ala se dar kar uski raah ki talash mein Le Messie premier d'Islam ajoute: quiconque nourrissant la crainte d'Allah tente de suivre son chemin et l'implore pour que son affaire soit résolue, conformément à la loi énoncée dans le verset Walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, c'est-à-dire nous montrons nos voies à ceux qui s'efforcent de les suivre. Eh bien, suite à cette promesse, Allah montre la voie à cette personne en tenant sa main et il lui accorde la tranquillité de l'esprit. Mais si l'on prie avec un cœur regorgeant de ténèbres et une foi ternie par le polythéisme et l'innovation, à quoi servira pareille supplication et pareille requête? Quels résultats positifs porteront ces supplications et ces requêtes? Ainsi donc, nous devons constamment nous analyser. Et nous devons nous demander si nous cherchons à suivre les voies d'Allah avec cette pensée et si nos cœurs sont entièrement libres de tout autre qu'Allah. Le Messie premier d'Islam attire notre attention vers le repentir et la torba. Il déclare que la torba et l'istighfar sont les moyens pour atteindre Allah. Allah déclare Walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Évertuez-vous dans sa voie et vous atteindrez la destination. Allah n'est avare à l'égard de personne. Il déclare: le Saint-Coran nous présente d'une part les attributs de grâce, de miséricorde, de bonté de Dieu. Le Saint-Coran présente Dieu comme Ar-Rahman. Mais d'autre part, Allah déclare Wa an laysa lil insani illa ma sa'a. Et walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Par ce faire, le Coran fait dépendre la grâce de Dieu des efforts et des luttes de l'homme. La conduite des compagnons nous sert de bons exemples à cet égard. Étudiez la vie des compagnons. Avaient-ils mérité leur statut par de simples prières? Non, certainement non. Dans leur quête du plaisir de Dieu, ils ne se sont même pas souciés de leur vie et ils se sont sacrifiés comme des brebis dans la voie de Dieu. C'est à ce prix qu'ils ont mérité ce statut. Beaucoup souhaitent mériter ce statut par un simple souffle, et beaucoup souhaitent atteindre le trône de Dieu par un simple souffle. Ceci est impossible. Certes, Allah est gracieux et miséricordieux, mais il a aussi placé comme condition pour ceux qui souhaitent parfaire leur foi qu'ils doivent lutter pour sa cause. C'est à ce prix qu'Allah exaltera leur statut, et c'est à ce prix que leurs prières seront exaucées, et c'est à ce prix qu'ils seront témoins d'une plus grande mesure de la Rahmaniya et de la Rahimia de Dieu, à l'instar des compagnons du saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Ces compagnons, quant à eux, étaient incomparables dans l'amour qu'ils éprouvaient pour Dieu. Et même s'ils ont été tués dans la voie de Dieu, ils ont reçu la bonne nouvelle du paradis et du plaisir d'Allah. Le Messie premier d'Islam déclare: ceux qui, avec un grand émoi, s'efforcent d'atteindre Dieu, eh bien, leurs efforts ne seront pas vains. Et ils seront certainement guidés. Dieu s'approche de celui qui s'avance vers lui avec sincérité et de bonnes intentions afin de le guider. Il incombe à l'homme de méditer et de cultiver le désir et la soif de la quête de la vérité.
Suivez la voie indiquée par Dieu pour accroître votre savoir. Dieu est indifférent envers celui qu'il est envers lui. Ensuite, le Messie promet l'Islam déclare « Évertuez-vous à réformer votre nafs. Faites des efforts en ce sens, implorez Dieu lors de vos salats. À travers les aumônes et par tout autre moyen, soyez de ceux qui sont évoqués dans le verset « Walladhina jahadu fina ». Le malade consulte son médecin, il prend des médicaments, il prend des laxatifs, il se fait une saignée, il use de cataplasme. Il s'échine pour trouver une guérison. De même, faites de votre mieux pour vous débarrasser de vos maladies spirituelles. Et ne vous contentez pas de simples paroles, usez de tous les moyens que Dieu a mentionnés. Ceci est la voie par laquelle on atteint Allah, et ceci est la voie qui va nous pousser à prier davantage. Le Messie premier l'Islam déclare « Ce monde doit être aux yeux de l'homme si détestable qu'il s'efforce de le quitter. Ne considérez pas cette vie comme une fin en soi. Sachez que cette vie matérielle est éphémère et impure. Ayez recours à la prière. Celui qui use à bon escient des moyens et de sincères supplications méritera le salut de la part d'Allah. Celui-là sort de la vie pécheresse car la prière n'est point insignifiante. La prière est une mort. Quand l'homme accepte pareille mort, Allah le protège de sa vie coupable qui était la raison même de sa mort spirituelle. Et Allah lui accorde en retour une vie qui est pure. Le Messie premier l'Islam ajoute « Beaucoup de gens considèrent que la prière est banale. Mais sachez que cette doua, cette supplication ne se limite pas à accomplir la salat en levant ses mains et en s'asseyant et en énonçant toute parole qui traverse l'esprit. Pareille supplication n'est d'aucun avantage, car elle n'est qu'un simple mantra. Le cœur n'y participe pas, et celui qui en use ne professe aucune foi dans la puissance de Dieu. La prière, sachez-le, est une mort. Au moment de la prière, le suppliant doit connaître la même anxiété, la même agitation qui précède la mort. Sans cette tourmente et cette angoisse au moment de la prière, il ne sert à rien de prier. L'on doit se lever la nuit et présenter ses problèmes devant Dieu avec des supplications accompagnées d'une grande humilité et des pleurs. Cette supplication doit produire un état semblable à la mort. C'est à ce stade que la prière mérite d'être exaucée. Le Messie premier l'Islam déclare « Rappelez-vous également que la première et la plus importante prière est celle visant à se purifier des péchés. Il s'agit du principal composant de toutes les supplications. Lorsque cette supplication est acceptée et lorsqu'on s'est débarrassé de toutes ces impuretés et de toutes ces souillures, et lorsqu'on devient pur aux yeux de Dieu, les autres prières concernant les besoins essentiels et mondains ne sont même pas nécessaires. Lorsqu'on atteint ce stade, on n'a même plus besoin de prier pour ces besoins essentiels et mondains. Ces prières sont automatiquement acceptées. La plus grande prière nécessite un travail acharné et des efforts, et que l'homme prie pour qu'il soit purifié de ses péchés et pour qu'il soit un muttaqi aux yeux de Dieu. Ceci est la plus grande des prières. Il faudra se débarrasser des premiers voiles recouvrant le cœur. Lorsque ces premiers voiles commencent à disparaître, les efforts ne sont même plus nécessaires pour se débarrasser des autres voiles, parce qu'on est accompagné de la grâce de Dieu et des milliers de maux disparaissent de leur propre chef. Lorsqu'on est pur en son fort intérieur et qu'on a établi une relation sincère avec Dieu, celui-ci devient automatiquement le gardien et le soutien du suppliant. Avant même qu'il ne fasse une requête à Dieu, Dieu l'exauce. Ceci est un secret subtil, un secret qui se dévoile uniquement lorsqu'on a atteint ce stade. Avant d'atteindre ce stade, il est très difficile de saisir ce secret. Mais ceci exige un effort colossal, car la prière elle-même exige une grande lutte. Allah ne se soucie guère de celui qui est indifférent de la prière et de celui qui s'en tient éloigné. Allah s'écarte de celui-là.
La hâte ne servira à rien ici. Allah accordera gracieusement ce qu'il souhaite et quand il le souhaite. Il ne sied pas aux suppliants de se plaindre immédiatement du non-octroi de la grâce divine et de nourrir des doutes. Il doit continuer à mendier avec persévérance et patience. Qu'Allah nous permette d'appliquer tous ces conseils et de faire de ce Ramadan un moyen pour établir un lien fort avec Allah. Que nous puissions suivre les injonctions d'Allah et que nous ayons en lui une foi parfaite. Que nous puissions voir l'acceptation de nos prières et que cet état dure pour toujours. Et que nous ne cessions d'être les serviteurs purs d'Allah à la fois au cours du Ramadan et après le Ramadan. Qu'Allah nous guide sur ces voies, des voies desquelles nous n'allons jamais nous écarter, et qu'il nous accorde toujours son amour, et que nous puissions respecter le serment d'allégeance que nous avons prêté à l'imam de l'époque, et que nous ne soyons jamais privés de cette faveur d'avoir accepté l'imam de l'époque. Qu'Allah nous protège du mal de nos adversaires et de nos ennemis, et qu'Allah exauce chacune de nos prières et qu'il retourne contre nos ennemis leur mal, et qu'Allah ne cesse de produire les moyens pour le progrès de la Jamaat. Faites donc de ce Ramadan la source de l'exaucement de vos prières. Qu'Allah nous permette d'agir en ce sens. Priez également pour la situation du monde, qu'Allah protège le monde de la destruction et qu'il permette à l'humanité de reconnaître son Créateur. Après la prière du vendredi, je lancerai un site web de la MTA, un site qui a été créé par la MTA internationale. Ce site comprend aussi une application mobile. C'est un site qui présente mes sermons du vendredi sur les 313 compagnons de Badr. Les membres pourront suivre ces sermons sur ce site et ils pourront aussi lire des profils sur les compagnons et ils pourront aussi mettre en signé tout ce qu'ils ont vu ou tout ce qu'ils ont lu et visionné. De plus, il y a un quiz sur chaque compagnon. Le site web présente également des cartes pertinentes. On y présente également les prononciations arabes des noms et des mots difficiles. En sus des informations déjà disponibles sur le site, de nouvelles informations et vidéos seront publiées chaque semaine. L'adresse de ce site web est comme suit: www.313companions.org. Comme je l'ai dit, je vais lancer ce site web après la prière de Jumu'ah. Qu'Allah fasse que ce site web soit avantageux pour les membres. Alhamdulillah. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر